A shocking story has emerged from Uttar Pradesh. On Wednesday, two minor sisters from the Dalit community, aged 15 and 17, were found hanging from a tree outside a village in Nighasan in UP's Lakhimpur Kheri district. On Thursday, the UP police arrested 6 people in this case, believed to be involved in the crime. But the sheer brutality of the violence that was perpetrated on these minor girls brings back the horrors of the Hathras gangrape case that had sparked outrage in the country. It brings back horrific memories of the gangrape and murder of 2 teenage cousins in Uttar Pradesh's Badaun. Why are these crimes against women increasing in UP? And why are law enforcers often accused of cover-ups? Let's unbreak this news. These visuals of the 2 young girls are shocking and heart-wrenching. The 2 sisters were found hanging from a tree in UP's Lakhimpur Kheri district. The minor sisters, aged about 17 and 15 years, belong to the Dalit community. The family members of the victims have alleged that they were abducted and raped. A local villager spotted the bodies of the sisters hanging from the tree in a sugarcane field and raised an alarm. According to the UP police, the main accused in the case, Chotu, introduced the minor girls to the 3 other men, Junaid, Suhail and Rahman. They kidnapped both the girls, took them to a sugarcane field and raped them. The police said that the girls wanted to get married to the boys, but then the boys did not consent and decided to kill them instead. They used the dupatta of the minor girls to strangulate them. The men then called 2 more men, Karimuddin and Arif, who tried to remove the evidence from the crime scene and hung the dead bodies of the girls on the tree. कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए, सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। The UP police is accused of dealing with the case insensitively. This is how a police officer was seen talking to the victim's family. आप पीड़ित हो, ये मुझे पता है। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगी। आप बॉडी नहीं आएगी, आपको जो करना करेंगे। आपको धरना देना है, आग लगाना है यहाँ पे जिले में। एक बार सुनिए, ये जो आप लोग जितने लोग गलत सलाह दे रहे हैं ना, इनको आप लोग दे लीजिए। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आपको 40 दिन बैठना, आप 40 दिन यहाँ बैठिए। The brutal Lakhimpur Kheri case also brings to memory the horrific crime in 2020 in Hathras in Uttar Pradesh, where upper caste men gang-raped a 19-year-old Dalit girl. The UP police burnt the body of the victim without the family's consent. आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं 3rd क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? 3rd स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलना। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं?
आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ, वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो I told you right? या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। In 2014, another gruesome incident took place in Badaun in Uttar Pradesh, where the bodies of 2 cousins were found hanging from a tree. In this case too, the UP police and later the CBI were accused of botching up the investigations. In November 2014, the CBI said it concluded that the 2 cousins were not sexually assaulted and murdered, but had taken their own lives. In 2015, a POCSO court in Badaun rejected the CBI's version. Said he had faith in the system and was confident that his son would soon be set free, but added that if he was indeed responsible for what happened to those girls, he should then be punished. Meanwhile, the family of the 2 girls says if they don't get justice, they will hang themselves from the same tree from which the cousins were tragically found hanging. In early 2019, in the same Lakhimpur Kheri district, 2 minor girls were found hanging from an electric pole. The girls went missing after they went out of their homes to graze cattle. Even in this case, the station house officer was initially found saying that there was no possibility that the girls were sexually assaulted. Police subsequently said that this was a case of honor killing. Uttar Pradesh, which is the most populous state in our country, recorded the highest number of complaints of crimes against women in 2021. This is according to the data released by the National Commission for Women, NCW. Even the National Crime Records Bureau, NCRB report has stated that women in Uttar Pradesh faced the maximum crimes in the country in 2021. In UP, one after the other, we have seen many instances of brutal gang rapes and violence against women, including minor girls. But more than the shocking nature of these crimes, what is most appalling is the massive cover-ups being done by the law enforcers. How many more young, innocent lives need to be lost before the law enforcers and the lawmakers of UP wake up from their slumber? It is high time the UP government sends a stern message to the perpetrators of crimes against women and those disgraceful law officers who indulge in cover-ups.